हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम बात करने वाले एक न्यू कैटेगरी ऑफ ए ड्रग के बारे में जिसका नाम है जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। These are the drugs which are given to the patients before doing any kind of a surgical operation related to the patients. So that's why these are the drugs which are majorly administered to the patient to remove all the sensation of the pain in the patient. So generally these are those drugs which causes the reversible loss of all the sensation and the consciousness. So ultimately whenever we are giving the general anesthetic drugs to the patient, they only cause the loss of all the kind of sensation for a particular duration of a time. Okay, if we talk about what are the features of general anesthetic drugs, so these are the drugs which causes the loss of all the sensation. So we all know that in all the surgical procedure there is a certain kind of a pain in the patient. Patient is in the pain. So ultimately the features of general anesthetic drugs are they causes the loss of all the sensation in the patient, especially if any kind of a pain is in the patient. They also causing the sleep in the patient. They ultimately they causing the consciousness. Patient conscious हो जाता है. Other than these things, they also causing the amnesia in the patient. Amnesia is basically the memory loss. So ultimately patients की memory जो होती है एक certain और एक specific period of a time के लिए चली जाती है. Immobility, muscles जो the patient की relax हो जाती है. Patient is not able to do any kind of a movement. And the last effect of one of the feature of general anesthetic drugs are abolition of all the somatic and autonomic reflexes. जो भी पेशेंट को सेंसेशन रहती है जैसे सलाइवा सेक्रीशन, स्वेट सेक्रीशन, मसल मूवमेंट्स, ओके, पेरिस्टाल्सिस, ये सभी तरह के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए एबोलिश हो जाते हैं पेशेंट में. ओके, सो दिस आर द सर्टेन फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग. टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स, we can give the number of general anesthetic drugs to the patient. The first is inhalation gas. One of the gas which we can give to the patient as a general anesthetic drug is nitrous oxide. Patient को दे सकते हैं. Other than these things, we can give the volatile liquids like halothane, influrane, isoflurane, desflurane, sevoflurane. This kind of a drug भी patient को दे सकते हैं. Other than these things, we can also give them intravenous drug to the patient. We can also give the drugs by intravenous route to the patients like inducing agent and the slower acting drug. Inducing agents include thiopentone, sodium methohexytone, etomidate, sodium propofol. These are the inducing agents. Other than these things, we can also give the slower acting drugs to the patient like benzodiazepam, diazepam, lorazepam, midazolam. These are the kind of drugs which are given by the intravenous routes to the patients. So here they have given us what are the various routes by which we can administer the anesthetic drugs to the patient. We can give the enteral route जिसमें हम oral को use कर सकते हैं, rectal को use कर सकते हैं. Other than these things, we can also administer the drugs to the patients by the parenteral route. We can give it by the sublingual, beside the lung, by the intranasal, by the intramuscular or intravenous. Okay, coming to the overview, if we talk about, it is a complex procedure involving pre-anesthetic assessment. मतलब क्या रहता है कि before the administration of anesthetic drugs, we have to check the number of parameters in the patient. We have to check the blood pressure. We have to check the pulse rate of the patient. We have to check all certain vital parameters if they are properly working or not. Okay, administration of general anesthetic drugs has to be given by the proper precautions we have to follow during the administration of general anesthetic drugs. We have to go for the monitoring of cardio-respiratory parameters को भी monitor करना पड़ता है. We have to go for the analgesia. We have to check कि patient after the administration of that general anesthetic drug, complete pain is removed in that patient. उसके बाद एयरवे मैनेजमेंट, वी हैव टू गो फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एयरवेज इन द पेशेंट. फ्लूइड मैनेजमेंट देना पड़ता है. ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेन रिलीफ, मतलब आफ्टर द ऑपरेशन भी देयर कैन बी द सर्टेन पेन टू द पेशेंट. सो जनरल एनेस्थेटिक ड्रग शुड बी सच दैट कि आफ्टर द ऑपरेटिव पेशेंट को किसी भी तरह का पेन ना हो. ओके, सो देयर आर द सर्टेन स्टेजेस एंड द साइन व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द patient general anesthetic drugs. Traditional description of signs and the stages of general anesthetic drugs are also called the Gudial sign. These are the signs which are typically seen when we administer the ether drug to the patient. Slow action as very much lipid soluble. जो ether होता है उसका action काफी slow होता है as it is a very much lipid soluble drug.
Okay, descending depression of central nervous system, it causes the depression of central nervous system. Higher to the lower areas of brains are involved when we giving the this kind of a drug to the patients. Okay, vital center are जो medulla oblongata में vital centers होते हैं वो first last में paralyzed होते हैं. Okay, stage 1 is the stage of surgical anesthesia. ठीक है, we are firstly talking about the stage of general anesthesia, extends from onset of spontaneous respiration to the respiratory paralysis. this ये कहाँ से start होती है? It start from the onset of spontaneous respiration. सबसे पहले respiration चलती रहती है, फिर end में respiratory system completely paralyzed हो जाता है. ठीक है, सॉरी यहाँ से इसके stages start होते हैं. The first stage is of general anesthetic drugs is stage of analgesia, that is removal of a pain. It start from beginning of anesthetic inhalation, जैसे हम inhalation से दे रहे हैं, and end तक कहाँ तक रहती है? Loss of consciousness. Pain is progressively abolished during this stage. When we start the administration of anesthetic inhalational drug to the patient, pain धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है. फर्स्ट स्टेज में पेशेंट कॉन्शियस जरूर रहता है, उसको सुनता भी है, उसको दिखता भी है, फील्स लाइक ए ड्रीम, लाइक ए स्टेट उसका रहता है. इस केस में व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज में पेशेंट के जो सभी सोमैटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, वो नॉर्मल ही रहता है. इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, यूज इज लिमिटेड टू शॉर्ट प्रोसीजर ओनली. अगर हमें पेशेंट को सिर्फ उसकी पेन को रिमूव, पेन को ही, सेंसेशन को कम करना है, हम नहीं चाहते कि उसके बाकी उसको कॉन्शियस ही रखना है हमें, तो उस केसेस में हम ये दे सकते हैं. ये कभी नहीं रहता जैसे सपोज आप कोई टूथ एक सर्जरी करवाने जा रहे हो, इन दैट केस वी कैन मेंटेन द पेशेंट इन द स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, जिसमें पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, उसको सभी सुनेगा, सभी दिखाई देगा. ओके, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम नॉर्मल रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग इन द पेशेंट. स्टेज 2 इज स्टेज ऑफ डेलीरियम एंड एक्साइटमेंट. द स्टेज 2 इज अ okay, so stage 2 is a kind of a stage when the stage of patient is a stage of delirium and excitement. Okay, so this is a kind of a stage in which the patient is coming from the loss of consciousness to the beginning of automatic breathing. जिसमें पेशेंट होता है वो, इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है एंड पेशेंट की जो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग है वो बिगिन हो जाती है. आईलैशेस रिफ्लेक्सेस डिसअपियर, जो उसके आईलैशेस रिफ्लेक्सेस रहते हैं उनका डिसअपियरमेंट हो जाता है. एक्साइटमेंट, द पेशेंट में शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रेथ. पेशेंट हो सकता है वो शाउट कर सकता है, स्ट्रगल कर सकता है एंड होल्ड हिज ब्रेथ, अपनी ब्रेथ को होल्ड भी कर सकता है. इसमें पेशेंट की जो मसल टोन रहती है वो काफ़ी इंक्रीज रहती है, जॉस उसके टाइटली क्लोज्ड हो जाती हैं. ओके, ब्रीदिंग इज जर्की, vomiting, involuntary micturition or defecation can occur in the patient. Okay, no stimulus and operative procedure carried out during this stage. इस स्टेज में भी हम कोई बहुत ज़्यादा स्टिमुलस वाला और ऑपरेटिव प्रोसीजर पेशेंट को नहीं करेंगे. इस स्टेज में पोटेंशियल डेंजरस रिस्पॉन्स कैन अगर, इस केस में कुछ पोटेंशियल डेंजरस इफेक्ट हो सकते हैं, लाइक वॉमिटिंग हो सकती है, अनकंट्रोल मूवमेंट हो सकती है, एंड लारिंजियोस्पासम, मतलब स्पास और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ लैरिंक्स. This stage is not found with the modern anesthesia. ठीक है, this stage is not, इस स्टेज को हम ये modern anesthetic drugs दे रहे हैं पेशेंट को, उस केस में ये स्टेज नहीं आती है. ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द स्टेज 3, दैट इज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया. इसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन पेशेंट की खत्म होती है, स्टार्ट यहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी का पैरालाइज हो जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है. इस स्टेज में, इस स्टेज को 4 स्टेजेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है. प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4. प्लान 1 इज रोविंग आई बोल्स. दिस प्लान एंड व्हेन द आईज बिकम फिक्स्ड. पहले आई बोल्स मूव करना शुरू कर जाती हैं, और ये प्लेन कब एंड होता है? जब आईज फिक्स्ड हो जाती हैं. सेकेंड इज लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्स. जैसे आईज का जो कॉर्निया का मूवमेंट होता है वो बंद हो जाता है, एंड लैरिंक्स का जो रिफ्लेक्स होता है वो बंद हो जाता है. प्लेन 3 में प्यूपिल स्टार्ट डायलेटिंग. प्यूपिल भी जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, और लाइट का रिफ्लेक्स भी बंद हो जाता है. दिस वॉज अ डिजायर्ड फेस ऑफ सर्जरी व्हेन मसल रिलैक्सेशन वर नॉट यूज्ड. ये डिजायर्ड स्टेज है कि उसको कोई भी लाइट रिफ्लेक्स ना दिखे, उसकी आईज फिक्स रहे. प्लान 4 इज इंटरकॉस्टल
पैरालिसिस, शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एंड डायलेटेड पीपल, डायलेटेड रहता है, इंटरकोस्टल सिस्टम जो रहते हैं वो भी पैरालाइज्ड हो जाते हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन वो भी कभी देर के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 4 इज मेडुलरी और रेस्पिरेशन पैरालिसिस, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, फेलियर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रीदिंग बंदे की स्टॉप हो जाती है, सर्कुलेशन उसका कंप्लीट फेल हो जाता है और डेथ भी हो सकती है। पीपल्स उसके वाइडली डायलेटेड हो जाते हैं, पल्स उसकी इनप्रेडिक्टेबल रहती है, बीपी उसका काफी लो हो जाता है। सो स्टेज 4 इज नॉट अचीव्ड इन द केस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, स्टेज 3 तक ही रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एन इंडिविजुअल अगर हम बात करें, डाइइथाइल ईथर इज अ फर्स्ट इनहेलेशनल एनेस्थेटिया drugs which we can give to the patient. So general anesthetic drugs are colorless. This is the colorless highly volatile liquid with a pungent odor. जिसका volatile liquid काफी रहता है, pungent odor with a high boiling point up to the 35 degrees centigrade. It produces the irritating vapors and it is very inflammable and explosive. Pharmacokinetics, 85 to 90% of this diethyl ether is eliminated through the lung and जो remaining रहता है which that get eliminated through the skin of a patient, through the urine of a patient, milk of a patient and sweat of the patient. This drug is not able to cross the placental barrier. Okay. Next is coming to the ether. Advantages क्या है, कैन बी यूज विदाउट कॉम्प्लिकेटेड अपरेटस, इसको हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड अपरेटस, पोटेंट एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड हैविंग अ गुड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मसल रिलैक्सर अच्छी कॉज करता है, द सेफ्टी ऑफ मार्जिन इज वेरी वाइड, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन एंड द ब्रोंको डायलेशन अच्छा इफेक्ट करता है, डज नॉट सेंसिटाइज द हार्ट टू द एड्रेनलिन इफेक्ट। ओके, कोई कार्डियक अरिथमिया नहीं है, कैन बी यूज ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑल्सो, it does not cause any liver toxicity and nephrotoxicity, but disadvantages क्या है, it is quite inflammable and explosive, slow induction and unpleasant effect, रिकवरी काफी स्लो रहती है कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स पेशेंट में आते रहते हैं, कार्डियक अरेस्ट इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, हो सकता है, कॉन्वल्जन्स इन द चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन में डाइथाइल ईथर को यूज करेंगे तो कॉन्वल्जन्स जैसे कि एपिलेप्सी में होता है, अनवॉलंटरी मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड हो सकता है, क्रॉस टॉलरेंस, इथाइल अल्कोहल में क्रॉस टॉलरेंस भी प्रोड्यूस्ड हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज कमिंग टू द नाइट्रस ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस, NH4NO3, दैट इसका प्रिडिक्शन कैसे होता है, NH4NO3 का ब्रेकडाउन होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, इनऑर्गेनिक गैस विद हैविंग द स्वीट टेस्ट, इट इज नॉन इन्फ्लामेबल, इन्फ्लामेशन नहीं कॉज करती, इरिटेटिंग में नहीं कॉज करती, बट इसकी पोटेंसी काफी लो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक। ओके, कैरियर एंड एडजुवेंट टू द अदर एनास्थेटिक्स, या तो हम 70% या 25 to 30% कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एज ए सिंगल, अगर हम इसे सिंगल यूज करते हैं तो इट इज यूज विद द O2 इन द डेंटल एक्सट्रैक्शन, अगर हमने कोई टूथ निकालना है, और ऑब्स्टेट्रिक्स इन द प्रेगनेंसी केसेस में हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट इज नॉन इन्फ्लामेबल, नॉन इरिटेटेंट, रैपिड इंडक्शन, अच्छी लो कॉन्सेंट्रेशन में मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इट डज नॉट कॉज द nausea and the vomiting kind of side effects, it does not cause any kind of a toxicity to the liver, kidney and the brain. What if I talk about the disadvantages, it is not potent alone, अकेला potent नहीं है, potent है but it is not potent alone, we have to give it with a certain another drugs, it can cause a hypoxia, that is oxygen deficiency, inhibit the methionine synthesis को inhibit कर देता है which is required for the DNA synthesization, it is inhibiting the vitamin B12 metabolism को भी inhibit करता है, dentist और personal abusers at risk, जो dentist होते हैं और personal लोग रहते हैं वो abusers are at a very risk of taking the nitrous oxide, gas filled spaces is very dangerous kind of a thing. So these are the certain advantages and the disadvantages of nitrous oxide. उसके बाद हेलोइथेन भी दे सकते हैं, हेलोइथेन is a fluorinated volatile liquid रहता है which is having very sweet odor, it is a non irritant, non inflammable kind of a gas and it is supplied in the amber colored bottle में इसको supplied किया जाता है,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनेस्थेटिया काइंड ऑफ अ ड्रग. बॉइलिंग पॉइंट 50 रहता है. फार्माकोकिनेटिक्स 60 to 80%, it get eliminated unchanged from the body. 20% it retained in the body for the 24 hours and the metabolized. हेलोथेन के क्या क्या एडवांटेजेस है? इट इज नॉट इन्फ्लामेबल, नॉन इरिटेटेड, नॉन इरिटेशन, फेरेंजियल और लैरेंजियल जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं उनका ब्रोंकोडाइलेशन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पीडी इंडक्शन एंड रिकवरी. इट कंट्रोल द बीपी. ओके, इट इज इनहिबिटिंग द इंटेस्टाइनल एंड द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? स्पेशल अपैरेटस यूज करना पड़ता है. ओके, poor analgesic and muscle relaxation. If we talk about the analgesic effect जो इसका रहता है वो काफ़ी कम रहता है, and muscle relaxation भी इतनी अच्छी नहीं होती है. Hypotension and direct action and the failure of sympathetic activity. It can cause a decrease in the BP of a patient. It causes the direct action, potentiate the calcium. Okay, it causing the failure of sympathetic system. उसके बाद arrhythmia cause कर सकता है. It can cause the direct vagal system stimulation. It can also cause the direct depression or suppression of the sinoarterial node, lack of baroreceptor action. So ultimately because baroreceptor इसमें पर्सन की बॉडी खुद ब खुद अपने बीपी और अपने जो एक्सेसरी हार्ट बीट को डिक्रीज करने के लिए काम करती है, बट बिकॉज इट इज नॉट एबल टू डू दैट, सो दैट्स व्हाई इट कॉजेज द कार्डियक अरिथमिया. इट कैन ऑल्सो कॉज द depression of respiratory system. It decreases the formation of a urine in the body due to the decreased glomerular filtration rate. It can also cause the hepatitis, but very rare cases, malignant hyperthermia. It can cause the increase in the temperature in the body, prolonged labor pain. Labor pain काफी लंबी तो prolonged हो जाती है अगर हम ये दें during the pregnancy or during the delivery. And fluorine, it is a non-inflammable gas with having the mild sweet odor which boils at 57 degrees centigrade. It is similar to the haloethane in the action, but except better, इसकी जो muscular relaxation होती है उससे better रहती है. It depresses the myocardial forces of attraction को depress कर देता है and sensitize the heart to the action of adrenaline. It induces the seizures in the deep anesthesia. ये जो होता है वो डीप एनेस्थीसिया के दौरान ये सीजर्स कॉज कर सकता है. सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज दिस. मेटाबॉलिज्म इसका जो रहता है 1/10 ऑफ दैट ऑफ हेलोइथेन. ओके, मेटाबॉलिज्म जो होता है इट इज रिलीज अ फ्लोराइड आयन विच कैन कॉज अ रीनल टॉक्सिसिटी. ओके, which can cause a renal toxicity. So rest we will discuss in our next video आइसोफ्लोरिन के बारे में और नेक्स्ट उसके बारे में. ठीक है, सो अभी तक हमने बात की जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में. जनरल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन टू द पेशेंट विच कैन कॉज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन द पेशेंट and the various reflexes occur immediately in the patient when we administer the general anesthetic drug. Okay, loss of consciousness, sleep, muscle relaxation, and this kind of an effects, immobility. Okay, we can give the anesthetic drugs by the number of routes, sublingual routes, intravenous route, intramuscular route, intranasal route, number of routes से दे सकते हैं. ओवरव्यू दे सकते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट, प्री एनेस्थेटिक, ये सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट. थैंक